Hello friends, समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ and very good evening. Welcome back to our Aasaan Academy 1000 amazing question and answer series. Basically morphology discuss करथुलु and आज हम अच्छो lecture number 7 रे किंबा geomorphology रा part number 3 रे. Recently students trends रे हमको देखिया को मिलुचे कि karst topography रो हमको बहुत टाइप रो क्वेश्चन देखिया को मिलुचे. आज मु आपन पे बेसिकली जो भी क्वेश्चंस नहीं के आछि that is mostly concentrated or associated with the depositional landform, erosional landform, कौन होची karst topography, किछिटा basic definition questions. Along with that, some questions जोटा maybe आपण आगुरु जानचंदी but that is somewhere related with the karst topography. आज हमर concept होची about karst topography. What is karst topography? Karst topography students होची जेतेबेले हमर लैंडस्केप रे हमर एनवायरनमेंट रे एम्ति स्टोन्स माने अछंती दैट इज rich in calcium carbonate. किछि एग्जांपल stones like limestone, dolomite and gypsum. जेतले हमको ए टाइप रो स्टोन्स देखिया को मिलचे स्टूडेंट्स, ए जो स्टोन्स अछंती जो रॉक अछंती ए माने एसिड रेन द्वारा किंबा एसिड वाटर द्वारा धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाउचंती, अफेक्टेड होचंती एंड अफेक्ट है कि जो टाइप रो फॉर्म्स जो टाइप रो फीचर्स क्रिएट करचंती ताकू ही आमे कहूचु karst topography. All these types of stone when react with acid rain and create the type of features that is known as karst topography. Clear with that? Karst topography रो common examples कौन कौन friends? जेमती कि sinkholes, caves, underground rivers, stallites and stalagmites. Clear with that? मुझे सबू जाक वर्ड विषय रे आपन को ग्रेजुअली टिके टिके आइडिया देबी एंड हमें डिस्कशन करिबा थ्रू द एमसीक्यूज. Along with that हमें डिस्कशन करिबा अबाउट abrasion, deflation, abrasion कोन, deflation कोन, saltation कोन, solution कोन and corrosion कोन. मु एटा शॉर्ट रे लिखुची बिकॉज़ हमें सब जिंस डिटेल रे डिस्कशन करिबा. तो चलंतु फ्रेंड स्टार्ट करिबा हमर फर्स्ट एमसीक्यू. Aeolian process are primarily caused by aeolian. एओ सुनी के हमको फील आछि रिलेटेड विथ एयर. क्लियर? तो आंसर होची विंड. बट जदी हमर को भी प्रोसेस दैट इज अफेक्टेड बाय वाटर, वाटर केस रहले हमें तो कहबा फ्लुवेशन. जदी सेटा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लेशियर होची देन वी से दैट इज ग्लेशिएशन. And जदि टेक्टोनिक एक्टिविटी सहित रिलेटेड वी से इट एज टेक्टोनिज्म किंबा डायास्ट्रोफिज्म. एंड जोटा विंड सहित होची दैट इज एओलियन प्रोसेस. क्लियर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एओलियन लैंडफॉर्म? एओलियन प्रोसेस होची द प्रोसेस दैट इज बीइंग डन बाय एयर. एयर द्वारा अभितर कोनटा होची देखंतु डेल्टा होची लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर before meeting the ocean. This is not the answer. Valley and rift, rivers form karanti nijaro starting and through the process they continue. The answer is amaro dunes. Clear? Dunes are the landforms created by deposition of sand by the wind, typically in the desert and coastal areas. What is the process of wind removing loose sediment from the surface called? देखो students, एटा गोटे loose surface अच्छी एंड एटी लूज पार्टिकल्स हमको देखिया को मिलछि. एंड ब्लू एरो रे मु शो करछि जे एटी विंड मूवमेंट होछि. विंड मूवमेंट सहित किछि पार्टिकल्स कैरिड हो जाउछि. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्लेशन. एटी मु आपन को बाकी सब विषय रे भी कहया को चाहिबी जोटा कि मु लेक्चर रो स्टार्टिंग रे कहउतली. अब्रेशन एक्चुअली होछि गोटे प्रोसेस माने जेमति कि विंड हे गेला, सपोज विंड, वाटर, आइस, ए सब जिनसों द्वारा जो पार्टिकल्स कैरिड होची से माने जो इरोजन करचंती, जो डैमेज करचंती दैट इज नोन एज अब्रेशन. सपोज फॉर एग्जांपल विंड कैरी करूची छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स को. विंड द्वारा कैरिड होतिबा सैंड पार्टिकल्स माने जो रॉक
को इरोज करचंदी इरोड करचंदी दैट इज नोन एज अब्रेशन किंबा सपोज वाटर रे सैंड पार्टिकल्स रहउची वाटर रे मूव करथिबा सैंड पार्टिकल्स जो रॉक ऊपर इंपैक्ट करचंदी जो कोस्टल सॉइल ऊपर इंपैक्ट करचंदी दैट इज नोन एज अब्रेशन then ଆମେ ଆସିଯିବା deflation deflation होची the process by which wind blows away finer particles from the surface leaving coarser material behind जेमति कि एठी हमें देखि पारछु छोट छोट फाइन पार्टिकल्स अछंती ओवरऑल विथ टाइम छोट फाइनर पार्टिकल्स लेस इन वेट कैरिड आउट हिजबे देन एठी नेक्स्ट स्टेज रे हमकु बड़ बड़ पार्टिकल्स देखिया को मिलिबो दिस इज नोन एज डिफ्लेशन जो फाइनर पार्टिकल्स रिमूव्ड बाय विंड एंड heavier particles remain in the surface but abrasion कौन ए जो movement of small particles in the air किंबा in the water किंबा in the ice किंबा in the scrap ए माने जो damage करूचंती rocks को that is known as abrasion then हमर आसजिबा saltation and corrosion saltation होची suppose देखंतु एटी किछटा salt particles अछि let us assume किमचे sand particles अछि गोटे sand particle आसला एई salt सैंड से तो कोलाइड गला पुनी शिफ्ट हे गला एटी कोलाइड गला पुनी एटी कोलाइड गला सो दिस प्रोसेस जोठी की सैंड रो मूवमेंट गोटे पार्टिकल ऊपर कोलाइड करी की जंप करी की होची दैट इज नोन एज सॉल्टेशन क्लियर एंड देन हमर आस जाउची कोरोजन कोरोजन को हमें आउ कोन कहैथो सॉल्यूशन ए ना गुडा मन रखिबे स्टूडेंट्स बारंबार आपन को पीवाईक्यू किंबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे ए रिलेटेड क्वेश्चन देखिया को मिलुची यूजुअली सॉल्यूशन सुनी के हमको लागुथिबो कि केमिस्ट्री रिलेटेड जिंसो एटा आंसर नो एटा ऑप्शन नो बट प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली इट मे हेल्प यू टू एलिमिनेट द ऑप्शंस तो कोरोजन माने कोन कोरोजन इज अदर वर्ड इन ज्योग्राफी फॉर केमिकल वेदरिंग जेतोले केमिकल्स जोगु वेदरिंग होची किंबा रॉक को हमें छोटो छोटो फाइनर पार्टिकल्स रे ब्रेक डाउन करछु क्लियर एग्जांपल हमर कोन ना सपोज लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर दिए एसिडिक वाटर understanding the point now let's move to question number 4 what type of dune is formed when wind blows consistently from one direction clear wind consistently blow करूची तो answer is Barchan dune एटा टिके फैक्चुअल जस्ट मन रखंतु मु एथरे गोटे पैराबोलिक रो भी क्वेश्चन नै गेसची द बाउंसिंग बैक मूवमेंट ऑफ सैंड ग्रेन्स caused by wind is called जस्ट मु टिके टाइम आगु डायग्राम करथिली देखंतु बाउंस हे की मूव करी करी की मूवमेंट होची ना this is known as saltation clear with that refers to hopping and bouncing movement of sand grains which is common in aeolian processes which of the aeolian mane air related process clear which of the following landforms is produced by wind erosion the answer is yardang are streamlined ridges streamlined mane students a type of shape clear ridges by wind erosion where softer material is eroded away leaving some resistant rock behind suppose usually eta एमदी थिबो स्टार्टिंग रे एंड जेतले इरोजन हला क्लियर जो पार्ट स्ट्रांगली बॉन्डेड नथिले दैट गॉट रिमूव्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज अ स्ट्रीमलाइन शेप क्लियर एंड ए स्ट्रीमलाइन शेप रे जति की पार्टिकल अछि जो मटेरियल अछि दैट इज very strongly bonded kimba very rough and resistant in nature a large flat stony surface desert surface formed by wind erosion is called देखो मु आपन पे गोटे रफ डायग्राम बनौछि लार्ज एरिया फ्लैट एरिया स्टोनी डेजर्ट सरफेस जोठी कि हमको स्टोन्स देखिया को मिलछि क्लियर formed by wind erosion is called देखो deflation hollow is not the answer hollow इटी किछि नहीं that is a flat surface dunes भी नुहो dunes is deposition of sand movement of sand particles but एठी हमको तो कोन देखा होची stony desert surface clear तो एलिमिनेशन रो आपण बी आउ डी को काटी दे परिबे आपण को या भितर प्लाया आउ डेजर्ट पेवमेंट विषय किछि आईडिया नहीं स्टूडेंट्स प्लाया होची गोटे फ्लैट ड्राई डेजर्ट बेसिन जोटा कि सीजनली केबे केबे वाटर भी कलेक्ट करे clear with that and next number हो जाउची desert pavement ए क्वेश्चन रा आंसर होची desert pavement and playa होची desert basin so it is also mostly composed of sand and not a stony desert
and it a flat भी नुह. Why not that flat? Because it stores some amount of water. Desert pavement is more flat in nature and more stony. Clear? So desert pavement is formed by removal of fine particles through deflation. Wind movement होउची and finer particles को carry करिकी नहीं जाउची, leaving a surface covered by closely packed of stones. Which feature is created when wind blown sand accumulates in an area with an obstacle? Wind carry करिकी नौची. Suppose this is air, this is carrying sand and गोटे जगह deposition होउची. This is known as dunes. Clear concept? इतर बहुत किसी logic नहीं. Which term describes fine particles being lifted and suspended by air in the air by the wind? देखो मु आपनको क्विक रिविजन करे दूची. सॉल्टेशन होची 1 to 1 एमती कंबाइन करिकी गोटे परे गोटे कोलिजन होतिबो, बाउंसिंग एंड हॉपिंग अप. डिफ्लेशन होची फाइनर पार्टिकल्स रिमूव हे जाउतिबो. ट्रैक्शन एंड सस्पेंशन विषय मु आपनको ए आंसर रे कहिबी. देखो ट्रैक्शन जदि मु आपनको सिंपलेस्ट वे रे बुझिया पे चाहिबी, जेमती अज्यूम करंतु ट्रैक्टर, सिमिलर वर्ड. जते बेले हमरो रिवर बेड रो किबा रिवर रो फाइनर पार्टिकल्स को आमे डिस्कार्ड कर दबा, ता छडा जो बड़ बड़ एई साइज रो पत्थर अछंती, इटा अछंती, डिपोजिट्स अछंती, सैंड अछि, क्ले अछि, जते भारी जिंस तार जते मूवमेंट होची along the river bed, that is known as traction. Clear with that, students? So traction is not the answer. Traction basically is the heavy particles, bulk particles being lifted, lift bhi hi paribani, being pushed by the water. Clear? So these two are not the answer. Traction आपण बुझले. Then amara जाउची suspension. Suspension कोन refers to fine particles being carried aloft by wind, typically remaining airborne over long distances. ड्यून्स कौन जो विंड्स कैरी करिकी नौचंती सैंड पार्टिकल्स को ताको गोटे जगह रे डिपॉजिट कर दोचंती. बट जदि से माने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करचंती एंड विंड रे ही सेटल हेकी रहउचंती फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ टाइम, ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम, वी से दैट इज सस्पेंशन. क्लियर? ट्रैक्शन आपण बुझी गेले. ट्रैक्शन हमकु यूजुअली जोटी बहुत स्ट्रांग करंट्स थाए सेठी देखिया को मिले. स्ट्रांग करंट माने स्लोप रो डिफरेंस अछि किंबा वाटर रो वेलोसिटी अछि, वाटर एनर्जी बहुत अधिक अछि, जेमति कि बोल्डर हे गेला, पेबल हे गेला, ग्रेवल हे गेला, ए सब को रिवर बेड किंबा सी बेड रे बहुत इंटेंस प्रेशर देकी मूवमेंट करा जाय. ठीक अछि. व्हाट आर द क्रिसेंट शेप ड्यून्स with their horn pointing upward? The answer is parabolic dunes. What are the crescent shaped dunes with their horns pointing upwind called? The process by which the wind-borne particles grind and erode the surface is known as abrasion. Just discuss कलु हमें. Solution विषय भी हमें discuss कलु. Deflation भी अपन जान ले. Saltation भी अपन जान ले. Clear? What type of dunes are formed in the area with variable wind direction? माने suppose एमती wind चलची है बे, ठीक टाइम पर wind से एमती move करियो. Clear? देखो तो 9 am रे suppose towards northeast wind चलची, 10 am रे towards northwest wind चलची, तो एटी गोटे हमको sand dune देखिया को मिलला. Then हमको 80 गोटे sand dune देखिया को मिलला, 80 गोटे sand dune देखिया को मिलला. So this basically leads to formation of a star dune. Clear? So the answer is the star dune are formed in the regions with variable wind directions, have multiple arms. Suppose this a type ro. Clear? Radiating from a central point. Which of the following is the primary force responsible for aeolian? Aeolian माने air related process. So the answer होची wind. Which feature is created by wind erosion and consists of hollowed out area in the desert? ए क्वेश्चन रो आंसर होची स्टूडेंट्स डिफ्लेशन हॉलो. मु डिफ्लेशन हॉलो आपनको एथरे डिस्क्राइब करछि. देखो डिप्लेशन हॉलो इज फॉर्म्ड when wind removes loose materials creating a depression in the desert landscapes. Continuously wind movement होची because of the pressure variance. कोठी टेम्परेचर अधिका अछि सेठी लो प्रेशर हे जाउची, जोठी टेम्परेचर इज हाई सेठी प्रेशर इज लो, and due to temperature is low सेठी pressure is high. या द्वारा and irregular heating of land and sea. दिन रे land शीघ्र heated up हबो, राति रे शीघ्र cool हे जिवो. Similarly ocean किंबा sea दिन रे late रे heated up हबो and राति रे lately cool down हबो. Considering the concept of land breeze and sea breeze, wind movement continuously होची. So when wind removes loose materials creating a depression in the desert landscape, we use the word deflation hollow. Which process involves larger particles being dragged or rolled along the ground by the wind?
along the wind ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ with water traction ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଥିଲି. So this is a revision question. What is the name of the depositional feature formed by wind blown slit? ଦେଖନ୍ତୁ answer ହେଉଛି loess. Loess is a fine wind-blown silt that forms extensive deposits, often far from its source. Why far from its source? Because एमाने बहुत ही fine particles, अंकर weight बहुत कम अच्छी, and they easily get carried away by the wind. So जोटा अंकर source अच्छी, suppose this is the source, एटू बहुत दूरा move करी परिबे आराम से, just like the जेमती सस्पेंशन रे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पळौचंदी एयर रे ही रही जाउचंदी पार्टिकल्स. This is not completely that, but that would just कम level रे distance far जाएगी सेठी settle down हो जाउचंदी. We use the word loess. Yardangs are typically aligned in the direction of prevailing wind. What type of dune forms when the sand is abundant and winds blow from two opposing directions? देखो स्टूडेंट्स आपण गूगल करके इमेजेस देख परिवे. सपोज विंड ए डायरेक्शन रो आछी एंड ए डायरेक्शन रो भी गोटे विंड आछी, तो हमको यूजुअली सैंड ड्यून्स केमती देखिया को मिले एमती गैप थिवो. दिस इज नॉर्मल प्लेस, पुणी एपट साइड रे सैंड ड्यून्स थिवो. दीज आर कंसीडर काइंड ऑफ गोटे पैरेलल लाइन फॉर्म कर दियंती and we say them as longitudinal dunes. Longitudinal dunes are elongated dunes. देखंतु continuously हे कि आछुंती form parallel to prevailing wind direction, often between two opposing wind directions. Which landform is produced by both air erosion and deposition? The answer is sand dune. Why? Because देखंतु wind एमती carried हे कि आछुची तादरे जो फाइनर पार्टिकल्स अच्छी सैंड पार्टिकल सेटा गोटे जगह डिपोजिट होची. बट जेतले ग्रेटर विंड रो मूवमेंट होची, दिस फाइनर पार्टिकल्स ऑफ द सैंड ड्यून्स आर अगेन गेटिंग कैरिड अवे. कोठी इरोजन होची एंड कोठी डिपोजिशन. दिस इज डिपोजिशन, दिस इज इरोजन. सो कंबाइनली दे फॉर्म एज सैंड ड्यून्स. व्हाट इज द कॉमन एओलियन फीचर फाउंड इन कोस्टल एरियाज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ द सैंड? कोस्टल एरियाज, said coastal dune. Coastal dunes are the sand accumulations formed by wind deposition along the coastlines. Clear? Karst topography. Karst topography मन पड़ला just lecture starting रे मंगोइली जितने बड़े भी rock particles को dissolve कर दबो acidic water that forms specific features known as karst topography. Clear? Karst topography forms primarily in area which type of bedrock? The answer is limestone. Limestone react करे with acid water. Clear? Karst landscape develop in the region with soluble rock like limestone and बाकी दीटा कौन मु lecture starting रे कहली, please let me know in the comment section. Clear? Dissolved by slightly acidic water. Which of the following features is common in karst topography? U-shaped valley, sinkhole, moraine, deltas. I have already told you about this. So what is a sinkhole? Sinkhole, sink जेमती suppose amaro this is a tap. जेमती स्टूडेंट्स आपण घरे देखुचंदी ना, सपोज दिस इज द बेस माने टैप एंड दिस इज द बेसिन, दिस इज द सिंक. सिमिलरली एटी जेमती बाकी जगह रे हाइटेड अछि बट गोटे जगह सडनली टैप डाउन हो जायछि. सिमिलरली सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस बट किछि किछि जगह रे हमरो सॉइल डिप डाउन कर जायछि, तळकु पळैछि, खसी जायछि, खाल्लो हो जायछि, डिप्रेशन हो जायछि. व्हाई? बिकॉज कहीं कि ना किछि किछि पॉइंट्स रे जो रॉक थिला जोटा स्ट्रांग हे कि थिला सेटा सॉल्युबल हे कि डिसॉल्व हो जायछि, डिग्रेड हो जायछि, इरोड हो जायछि. क्लियर? सिंक होल्स आर द डिप्रेशन और द होल्स इन द ग्राउंड formed by collapse of surface layer in the karst region. What is the process by which acidic water dissolves limestone to form karst landforms? Clear? Option hochi abrasion. No, this is not the answer. Option hochi deflation. No, this is also not the answer. Your answer hochi student solution. मु एठी आपन को attrition विषय भी define कर दउ. Student, suppose this is a river and it movement of water होची. आमे एबे जाय जानछु कि केबे केबे जेतले मूवमेंट होची ऑफ द substance like water तादर बहुत सारा sand particles भी move करूचंदी. suppose ये yellow गुडा होचंदी sand particles. एबे जेतले river move करूची ए sand particles each other सहित भी collide करूचंदी.
एंड कोलाइड डाउन हेकी से माने ईच अदर को ब्रेक डाउन करछंती आउरी फाइनर एंड फाइनर पार्टिकल्स रे आउरी छोटो एंड माइन्यूट पार्टिकल्स रे सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एट्रिशन क्लियर अबे अपन टिके बुझ परले जेतेबेले गोटे सब्सटेंस किबा गोटे जो आमर एजेंट अच्छी जे काइंड ऑफ इरोजन करुची ता भीतर जो पार्टिकल्स अछंती से माने ईच अदर सहित कोलाइड करिकी जदि निजको डैमेज करुचंती निजको आहुरी फाइनर पार्टिकल्स डेवलप कर देचंती दैट इज नोन एज attrition and our question answer hochi solution is the chemical process where acidic water dissolves soluble rocks like limestone creating the karst landforms. What is the term used for closed depression in the karst land sinkhole just टिके आगुरु कहितली these are just revision questions अपन थरे जानि गले ता रिलेटेड मु आ गुटे क्वेश्चन देछि सो दैट आपनकर लाइफ लॉन्ग मन रहि जाओ देन हमर आछिबा स्टैलेक्टाइट्स एटा मु आपनकर लेक्चर स्टार्टिंग रे मेंशन करतली एटा एंड आउ गुटे दिटा जिंस सेटा मु आज डिटेल रे this two I will describe with the question itself देखो फ्रेंड्स हमको यूजुअली केबे केबे देखिया को मिले जे किछि डिपोजिशनल स्ट्रक्चर एमती ड्रॉप बाय ड्रॉप डिपोजिट हेकी हे जाइछंती एंड केबे केबे हमको देखिया को मिले जे सीलिंग किबा छात ऊपर धीरे धीरे डिपोजिशन हेकी एई टाइप रो जिंस फॉर्म हे जाइछंती म आपन डायग्राम देखौची रियल फोटोस देखो स्टूडेंट्स ए जो एठी आपन को तीटा टाइप रो फीचर देखिया को मिलिबो वन काइंड ऑफ फीचर इज this type of एटा ए जो जिंसटा हेची दिस इज बीइंग डिपोजिटेड बाय द ड्रिपिंग वाटर जेमति वाटर ग्रेजुअली ड्रॉप बाय ड्रॉप पडिची बट वाटर रे जो मिनरल्स अछि सेटा सीलिंग सहित डिपोजिट हेकी ए टाइप रो स्ट्रक्चर क्रिएट करछि याकू हमें कहूछु स्टैलेक्टाइट्स क्लियर सिमिलरली जदि हमें तळ पोर्शन रे देखिबा ताहले हमकु ए टाइप रो भी किछि जिंस देखिया को मिलुछि जो वाटर ड्रॉप डाउन हेची सीलिंग रो से किछि एई भली स्ट्रक्चर भी क्रिएट करिछि दैट इज नोन एज स्टैलेगमाइट्स क्लियर विथ दैट गोटे होची स्टैलेक्टाइट्स गोटे होची स्टैलेगमाइट्स मु आपन को अदर इमेजेस देखौची फॉर मोर क्लियर एठी आपन देख परिबे स्टूडेंट्स बहुत सारा स्टैलेगमाइट्स देखिया को मिलिबो तळ पोर्शन रे एज यू कैन सी हियर एठी आपन देखंतु धीरे धीरे स्टैलेगमाइट्स देखिया को मिलिबो एंड जो गुडा ऊपर आछि तडा नोन एज स्टैलेक्टाइट्स क्लियर विथ दैट आई होप एबे आपन धीरे धीरे बुझ सारिबेनी व्हाट आर स्टैलेक्टाइट्स एंड व्हाट आर स्टैलेगमाइट्स तबे आसन अटेम्प्ट करिवा क्वेश्चन स्टैलेक्टाइट्स फॉर्म फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द caves रू तळुक आस्थाय एम्ति कंटीन्यूअसली एंड फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर सो दीज आर icicle shaped formations that hang from the ceiling of the caves formed by deposition of calcium carbonate from dripping water similarly stalagmites hochi they form in the cave floor a type ro clear and stalagmites form from on the floor of caves from the mineral deposits left by the dripping water drop rate continuously पडुचंदी and ताकर जो mineral deposits usually करगी pass on हो जाउचंदी a column in a cave forms when मु आपन को column बिषय टिके कहि दिए suppose this is from the ceiling and this is from the bottom जेतेबेले ceiling रू आस्थिबा पार्टिकल किंबा जो स्ट्रक्चर अछि and floor रू उठुथिबा stalagmites sm and st merge together this is known as column clear so a column is in a cave forms when a stalactite and a stalagmite meet clear with that answer hochi from the ceiling and from the floor they join to form a column which of the following is an underground karst feature hochi cave हमको बहुत सारा cave एमती देखिया को मिले जोटा अर्थ सरफेस रु तळे थिबो किबा माउंटेन्स भितरे थिबो सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स या भितरे बहुत सारा क्वेश्चंस अछि अबाउट कार्स आउ 10टा क्वेश्चंस अछि या नेक्स्ट लेक्चर रे फ्रेंड्स हमें जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीटली फिनिश ऑफ करिवा जो भी टाइप रो जो भी टॉपिक रो क्वेश्चंस रहि जाई छै हमर प्रीवियस जियोमॉर्फोलॉजी 1 2 एंड 3 इंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेथरे इंक्लूड करिया को ट्राई करबा यूजुअली हमें 40 क्वेश्चंस नै थाउ नेक्स्ट लेक्चर रे हमें मे बी 50 की 60 क्वेश्चंस इंक्लूड करिकी ओवरऑल जियोमॉर्फोलॉजी रे जति की डिफिकल्ट क्वेश्चंस अछि जति की पीवाईक्यू
why is important अच्छी, we will cover them all of them. And ଆପଣ ଆମକୁ definitely କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ geomorphology revision କେମିତି ଚାଲିଛି, you have any suggestions, any improvement, any queries, please let us know in the comment section. Thank you for watching the video. Let's meet very soon next Monday 8 p.m. sharp. Thank you so much.